Today we shall discuss the DC motor and speaker. These are two applications of force on current carrying conductor in magnetic field. These are two major applications in the chapter of electromagnetism. तो ये बेटे हम बात ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड a force act on it. Fleming's left hand rule told us the direction of this force. You see here, current move this way. You stretch three fingers. The first finger is in the direction of field. First finger is in the direction of field. Field is from north to south. This way is the field. You see here it's north, it is south. Then second finger show current. You see this finger show current. It is current this way. Thumb show force on current carrying wire. So force act in the upward direction. So this coil move in the upward direction perpendicular to the direction of magnetic field. So when a current carrying wire placed in a magnetic field, it will move. You see here how it moves. They place here the north pole. It is south pole. Here current enters. Current come this way. Current come this way and this way. Right? It is the direction of current. Right? Now again, Fleming left hand rule. This finger north to south. North here. You see it's north. It is south. First finger. This finger show current. Current is moving this way. Right? This way. Thumb show force. So this wire, it was the first position A. It moved by force this way. It reached to position B. This way the force is being applied. If we increase the current, you see more force applied in the same outward direction towards right. That this thumb pointing towards right here you see. So it is Fleming left hand rule. And now the force is maximum if angle is 90 degree. Force is maximum if angle 90 degree. Maximum for theta equal 90 degree. And force is 0 if theta is 0. If current is parallel to magnetic field, no force applied. Now you see here the same thing. Again we study. It is a just version of Fleming left hand rule. Here you see magnetic field is this way. It's magnetic field. This finger in direction of magnetic field, north to south. Stretch your finger. The current is moving downward, right? Towards bottom of the screen you see here. This finger show current, right? Second finger, current. And thumb show force. This is the force applied on this current carrying wire. If you stretch the finger, you will get the same force like this. Okay? You see here, field this way, current downward, and force outward, right? The force thumb is outward, out of page. Okay? Next. Again, DC motor principle. Now you see here DC motor, how it works. They place a coil in a magnetic field. You know, we take the current as conventional current. Current moves this way, this wire A, B, wire C, and D. You see here, current is this way. Current is this way. Field is north to south. This end is north pole. This end is south pole. Now for this wire, we have this rule applicable over here. This finger first show north to south in the direction of field. This finger in direction of current, right? It's current I this way. It's current. Where force act? In the downward direction. Fleming left hand rule. And at the wire DC, here I'm talking about this wire, this part of wire. Field again north to south. Current this way, it's current. And force act in the upward direction. So this coil take this turn in the
clockwise direction. You see here, this way, the second part, current moving this way, field, this finger current, thumb show force in the downward direction. And the field remains same, just current change its direction, right? If you come over here for the first left side, for left side, we have the field towards right, current out of page, this finger, current out of page, and thumb show force in the upward direction. If current is reverse, then force will reverse its direction. Okay. Here, they just increase the number of turns of coil. When they increase the number of turns of coil, the force also increased. Otherwise, the same things are over here. Here, few components of the motor. It is this component is called split ring. Split ring. Commutator is also sometimes called commutator. What it do? It reverses current direction after every half cycle. Reverse current direction after every half cycle. Direction after every half cycle. At 180 angle, turn, the direction of current will also change. Then we have, it's called carbon brush. What it do? Carbon brush, it provides sliding contact. Carbon brush. Through carbon brush, outer circuit link with the inner coil. Connect outer circuit to coil, which rotate through commutator. Okay. When the current is passed in the rectangular coil ABCD, rotate between the poles of the magnet due to magnetic force. According to Fleming's left-hand rule, the side AB act downward, force on CD act upward. These forces being equal in magnitude but opposite in direction, rotate the rectangular coil in an anti-clockwise direction. You see here, it rotates in the anti-clockwise direction like this. If you increase current, more force applied. If you increase magnetic field strength, more force applied. Here, function of parts. As I told you just now, split ring commutator. It reverses direction of current in the coil after every half cycle, with the result of direction of force is also reversed and coil keep rotating in the same direction. So reversal of current make sure that coil keep rotating in the same direction. Carbon brush, they connect the coil to the battery. Okay. Motor rule the same. We again see here. This finger show north to south pole. This finger show current this way, and this finger show force. Here again, the same thing is repeated again and again so that you get it in your mind. Okay, this finger towards south pole, north south. This finger current, right? And this finger show force. So force it rotates in the anti-clockwise direction. Okay. Now you see after rotation, what happened during rotation? You see here, current coming, suppose this is X, this is Y, half parts of commutator. Now, when they are vertical, no current pass through. When coil is vertical, suppose attack coil attach over here. When coil is vertical, then no current pass through it. Okay. Now it's suppose A, it's B. X touching A, Y touching B. Now in the next cycle, after half cycle, it's A, it's
Y. It's B. It is X. The commutator have reversed here. You see, red was first on right. Red was first on right side. Now it has come on left side. This make the current in the coil being reversed, right? And coil keep rotating. First current was coming, no current was is coming to red. No current is coming to red. Previously current was moving away from red, and current coming away from X. Previously current was coming towards X. Okay, so it reverses the current direction after every half cycle. Important slide, you need to learn it. Current flow in right angle and out of the left. Another view of splitting here, you see brush A, brush split ring, sorry, B. Now A has come towards right side, right? It's X, it's Y. It's X, it's Y. Now A and start connecting to Y. अब इसके रास्ते बहाल हो गए हैं Y के साथ, इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. A पहले यहाँ किसको टच कर रहा था? X को. अब A ने अपनी पार्टी बदल ली है और B ने अपनी पार्टी बदल ली है, राइट? B हैज कम टुवर्ड्स द, सॉरी, X हैज कम टुवर्ड्स Y नो. ठीक है जी. तो ये बेटे हमारे पास इस तरह कॉइल रोटेट करेगी और इसमें करंट की डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल रिवर्स होती रहेगी. इट्स बी, सॉरी, इट्स राइट, इट्स बी. बी अब जुड़ गया X से आके. पहले बी कहाँ से जुड़ा हुआ था? पहले बी की Y से अटैचमेंट थी. यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, अगर आप बेटा यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर बढ़ जाएगी. देखें ये हमारे पास सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ये बेटे इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नॉर्थ टू साउथ. ये फील्ड एंड कर्व में आ गई, राइट? लेकिन अगर हम प्लेस करते हैं दरमियान में सॉफ्ट आयरन कोर, तो सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोकस होगी टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? अब बेटा ये नो वेस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेस्टेड. वो तमाम यूटिलाइज होगी, कुछ तो होगी होंगी वेस्टेड, लेकिन चंद एक मेजोरिटी अब फोकस्ड हो गई हैं. ठीक है, आपके एग्जाम भी करीब है, आप भी बेटे फोकस हो जाएं. स्पीड ऑफ मोटर इज इंक्रीज. हाउ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ मोटर? मोर करंट, नंबर वन. मोर टर्न्स, करंट, मोर टर्न्स, stronger magnet, and then soft iron core. This way you can increase the speed of motor. स्पीकर, ये बड़े दौर स्पीकर का, आप भी स्पीकर से मेरी बात सुन रहे हैं. तो स्पीकर काम कैसे करते हैं? स्पीकर जी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं बेटा. ये देखें स्पीकर हैं, 4 साइज है डिफरेंट स्पीकर के. लाउडर साउंड, लेस एंड फेंट साउंड. ये बड़े स्पीकर के अंदरूनी मामला हैं. ये जापान में फैक्ट्री है जहाँ स्पीकर बनते हैं. ये पार्ट है, इसके नीचे कॉइल होती है, ठीक है. ये नीचे मैग्नेट हुआ है, इट्स मैग्नेट. तो ये घरों में बनते हैं, फैक्ट्रियाँ बनी है वहाँ पे ना, हमारे यहाँ घरों में सिर्फ बातें बनती हैं. ये बेटे मैग्नेट आ गया है, इट्स अ मैग्नेट. ये मैग्नेट एक आ गया, ठीक है जी. अब ये जो पार्ट है, ये जब टच करता है मैग्नेट से तो ये भी बन जाता है मैग्नेट. इट्स अ इंड्यूस्ड मैग्नेट. ये जो है ना बेटे, ये कॉयल है. ये क्या है जी? वॉइस कॉयल. ये कॉयल राइट लेफ्ट वाइब्रेट करती है और इस कॉयल के साथ अटैच है डायफ्रम. ये बेटे डायफ्रम है जो इससे अटैच है. तो डायफ्रम वाइब्रेट करता है, जब डायफ्रम वाइब्रेट करता है साउंड पैदा होती है. ये इसकी सस्पेंशन आई हमारे पास. अब देखें बेटे इसके अंदरूनी मामला. इसको एसी करंट दे रहे हैं, डीसी करंट से मूव करता है ओनली वंस. एसी से ये मुकम्मल तौर पे लेफ्ट राइट बार बार मूव करता रहेगा. ये बेटे कॉइल आ गई. ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ, दरमियान में क्या आ गया? नॉर्थ पोल. ये हमेशा रिवर्स होते हैं पोल आपस में ना. इसी बात को हम जरा डिटेल से अगर यहाँ देखें बेटे आगे, प्लीज लुक ओवर हेयर. ये डायफ्राम आ गया हमारे पास. ये कॉइल है बेटे, इट इज कॉइल, दरमियान में कॉइल आ रही है. ठीक है जी. ये क्या लिखा? करंट टूवर्ड्स व्यूअर. यहाँ बड़े करंट बाहर को आ रहा है, ये डॉट है, ठीक है ना. ये करंट आउट ऑफ पेज है. ये है करंट अवे फ्रॉम द व्यूअर. हम देख रहे हैं व्यूअर बेटे हम है, यहाँ करंट जा रहा है इनटू पेज, राइट. अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये थंब बड़े शो करता है पोल्स को, नॉर्थ टू साउथ.
करंट कहाँ जा रहा है, ये क्रॉस है ना, करंट करंट यहाँ पे क्या है बेटे, क्रॉस है ना, करंट इनटू पेज है, ये करंट इनटू पेज आ गया, तो फोर्स कहाँ बेटे आ जाएगी यहाँ पे डाउनवर्ड, फोर्स इज डाउनवर्ड। अच्छा यहाँ करंट कहाँ आ रहा है, यहाँ बेटे करंट आ रहा है, यहाँ डॉट है, करंट आउट ऑफ पेज है, राइट। तो ये करंट क्या आ गया जी, आउट ऑफ पेज। फील्ड है नॉर्थ साउथ, ये इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, ये बेटे फील्ड आ गया, नॉर्थ साउथ फील्ड आ गया, और फोर्स कहाँ आ गई, डाउनवर्ड। तो इस केस में मूव करेगी कॉइल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यहाँ करंट इनटू पेज कर दें, यहाँ करंट आउट ऑफ पेज कर दें, तो फिर बड़े फोर्स अप्लाई हो जाएगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये बात हम जरा यहाँ देखते हैं डिटेल के साथ, प्लीज लुक एट दिस केस। ये देखिए हमारे पास यहाँ बेटे डॉट और सर्कल शो करता है करंट आउट ऑफ पेज, डॉट सर्कल मीन करंट आउट ऑफ पेज, ठीक है जी। कलर चेंज कर देते हैं जी जरा ब्राइटनेस के लिए। अब देखें बेटे इस केस में व्हेन वी अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यू सी हियर प्लीज, ये देखें बेटे इस पार्ट में, फ्रंट पार्ट में फील्ड नॉर्थ टू साउथ, राइट। करंट कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ पेज, दिस फिंगर शो करंट आउट ऑफ पेज, फोर्स कहाँ हो जाएगी बेटे, टुवर्ड्स लेफ्ट। इस हिस्से में फोर्स अप्लाई होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये पूरे जो डायफ्राम कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। और बेटे अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फिर क्या सीन बनता है, व्हेन वी चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन वी हैव फील्ड अगेन नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन अपडेट होगी इनवर्ड, फोर्स क्या आ जाएगी टुवर्ड्स राइट, राइट। नॉर्थ साउथ फील्ड आ गया, करंट इनटू पेज आ गया, फोर्स आ गई टुवर्ड्स राइट, इन दिस केस डायफ्राम मूव टुवर्ड्स राइट। तो इस तरह बेटे जब इसको अगर एसी करंट देंगे तो ये कॉइल बार बार लेफ्ट राइट मूव करेगी, और डायफ्राम भी मूव करेगा, और बेटे साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। फैक्टर इंक्रीजिंग लाउडनेस, बेटे दो फैक्टर बढ़ाते हैं लाउडनेस को, नंबर एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लें तो मोर फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। नंबर टू लार्ज डायफ्राम, यू नो अगर बढ़ता है एरिया ऑफ वाइब्रेशन तो साउंड लार्ज हो जाएगी, लार्ज एरिया ऑफ वाइब्रेशन, इसे बोलते हैं लार्ज डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है जी। और बेटे द लास्ट थिंग, नंबर थ्री मोर करंट इन द वायर। आप जब ये अपने घर के स्पीकर के लिए जो आपके टीवी में है या आपके मोबाइल में है, जब आप उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं बेसिकली आप करंट बढ़ाते हैं, मोर करंट, मोर करंट, टोटल साउंड फोर्स अप्लाई हो जाएगी। फैक्टर इंक्रीजिंग पिच ऑफ साउंड, जस्ट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। जब आप म्यूजिक सुनते हैं खवातीन की आवाज में, उसमें खवातीन की आवाज में पिच हाई होती है, तो जो करंट पैदा होता है उसकी पिच भी हाई होगी, तो बेटे पिच ऑफ साउंड बढ़ेगी तो करंट की, जब पिच बढ़ेगी तो लाउडनेस उसकी जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ जाएगी। ये बड़े स्पीकर वे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो कौन ये जो कौन है वाइब्रेट करती है लेफ्ट राइट, और से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। ये देखें बेटे मोटर कैसे रोटेट करेगी, ये करंट आ गया दिस वे, दिस वे, दिस दिस, ये ब्रेक करंट इधर जाएगा ऐसे, यह करंट ऐसे आएगा। अब फोर्स बाय फ्लेमिक लेफ्ट हैंड रूल, यू सी हियर, फील्ड बेटे क्या आ गया, नॉर्थ टू साउथ। अब जो साइड इसकी ये साइड है, हम टाइप सेकंड साइड जो साइड राइट पे है, करंट कहाँ जा रहा है बेटे, करंट बाहर को आ रहा है, ये करंट क्या आ रहा है, करंट बाहर को आ रहा है आउट ऑफ पेज, फोर्स क्या हो जाएगी अपवर्ड। और जो दूसरा एंड है वहां पे करंट कहाँ जा रहा है, इनटू पेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड, ये फोर्स क्या हो जाएगी डाउनवर्ड। जो राइट आर्म है वहां फोर्स अपवर्ड, जो लेफ्ट आर्म है वहां फोर्स डाउनवर्ड, ओके। तो ये बेटे फोर्स हमारे पास आ जाएगी डाउनवर्ड, और ये बेटे फोर्स आ जाएगा हमारे पास अपवर्ड, ये फोर्स डाउनवर्ड, यहाँ फोर्स अपवर्ड, इट रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।